Hi everyone, welcome back to Read to Lead channel. Okay, today today our reading practice session is about chapter number 2, subcellular organelles and cell membrane. Okay, so आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे. सो चैप्टर एट ग्लैंस में हमें क्या क्या पढ़ना है. The reader will be able to answer question on the following topic, that is nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria, plasma membrane, transport mechanism, simple and facilitated diffusion, ion channel, active transport, uniport, symport, antiport. ठीक है. एंड चैप्टर नंबर 2 है सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. तो सब सेलुलर ऑर्गेनेल कहाँ से ये शुरू होता है. ओके. सो सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड सेल मेम्ब्रेन में हम सब सेलुलर ऑर्गेनेल देखेंगे. सेल कंटेन वेरियस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर. हमारा जो सेल होता है वो कंटेन करता है वेरियस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेल, जो कि फिगर 2.1 में दिखा गया है, जो कि ये है. ठीक है. When the cell membrane is disrupted, जब आपका सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टेड हो जाएगा either by mechanical means or by lysing the membrane by 2 in 20 a lipid solvent, the organized particle inside the cell are homogenized. This is usually carried out in 0.25 molar sucrose at pH 7.4. The organelles could then be separated by applying differential centrifugal force, जो कि टेबल 2.1 में दिया गया है. ठीक है, बाद में देखेंगे. नाउ Albert Claudy got Nobel Prize in 1974 for fractionating subcellular organelle. Albert Claudy got a Nobel Prize in 1974 for fractionating subcellular organelles. Now marker enzyme. Some enzymes are present in certain organelle. Only such specific enzyme are called as marker enzyme. टेबल 2.1 में दिया गया है. Some enzyme are present in certain organelles only. Such specific enzyme are called as marker enzyme. After centrifugation, the separated organelles are identified by detection of a marker enzyme in the sample. After centrifugation के बाद the separated organelle are identified by detection of a marker enzyme in the sample. After centrifugation, okay, the separated organelle are identified by detection of a marker enzyme in the sample. Okay, ठीक है. Okay. Now nucleus. It is the most prominent organelle of the cell. All cell in the body contain nucleus except mature RBC in circulation. ठीक है. ऑल जितने भी सेल के पास है, बॉडी में जितने सेल होते हैं उसके पास न्यूक्लियस होता है. हर सेल के पास न्यूक्लियस होता है, बट किसके पास नहीं होता है. एक्सेप्शन कहाँ पर, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन में जो आपका आरबीसी होता है एंड खास करके जो मैच्योर आरबीसी होता है उसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन ऑल्सो मे नॉट पोजेस ए रेडिली आइडेंटिफाइबल न्यूक्लियस. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन का जो अपर मोस्ट लेयर होता है ऑल्सो मे
not possess a readily identifiable nucleus. Okay. In some cells, nucleus occupies most of the available space. Example, small lymphocyte and spermatozoa. Nucleus is surrounded by two membranes. The inner one is called as perinuclear membrane with 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 अच्छा with से बाद में पढ़ेंगे. यहाँ पर किसका क्या. सो दिस इज द टिपिकल सेल. दिस इज द टिपिकल सेल. नाउ यहाँ पर जो वन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. वन कहाँ पर है. सो दिस इज नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, दिस वन इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. वन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. नाउ टू हो गया आपका न्यूक्लियर पोर. न्यूक्लियर पोर कहाँ पर हो गया. टू. सो न्यूक्लियर पोर. अच्छा, ये जो पोर मतलब जो छिद्र है, यहाँ पर बीच में जो गैप आ रहा है, आई थिंक वो न्यूक्लियर पोर है. ठीक है, टू मेंशन. थ्री हो गया आपका न्यूक्लियोलस. थ्री कहाँ पर है. ओके, थ्री हो गया आपका न्यूक्लियोलस. ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस, द इनर साइड. ओके, नाउ फोर हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फोर, आई थिंक ये वाला फोर. दिस वन इज योर नोन एज टोटली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फिफ्थ हो गया आपका गोल्गी बॉडीज. फिफ्थ 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 दिस इज नोन एज गोल्गी बॉडीज. ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होता है वो गोल्गी बॉडीज का है. उसके बाद सिक्स्थ नंबर पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा. ये सबसे इम्पोर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया को पहचानना. फिफ्थ. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया. अच्छा, गोल्गी बॉडी हो गया. सिक्स हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया. सिक्स भाई कहाँ पर है. सो दिस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया. ये कंप्लीट स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का है. ओके, सेवन माइक्रोट्यूबुल. सेवन. ओके, ट्यूबुल मतलब ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसलिए ये माइक्रोट्यूबुल है क्योंकि छोटा है. लाइसोजोम, एट नंबर पर लाइसोजोम आता है. अच्छा, ये वाला लाइसोजोम है. ओके, ठीक है. नाइन हो गया आपका वैक्यूल्स. अरे ये क्या आ गया. नाइन हो गया वैक्यूल्स. नाइन कहाँ पर है. ओके, दिस वन इज योर वैक्यूल्स. ओके, टेन हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसे कम्प्लीटली बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है. ठीक है. नाउ न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन. द इनर वन इज कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ न्यूमरस पोर्स, जो कि फिगर 2.2 में दिया गया है. फिगर 2.2. अच्छा, वो यहाँ पर क्या बोल रहा है. न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय, आपका जो न्यूक्लियस होता है वो सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन. द इनर वन इज कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ न्यूमरस पोर्स. पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पर. अच्छा, वो न्यूक्लियर पोर की बात कर रहे हैं. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन. द इनर वन इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, बाद में देखेंगे. द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, द केमिकल बेसिस ऑफ अ जीन which govern all the function of the cell. The very long DNA molecule are complexed with protein to form chromatin and are further organized into chromosomes. DNA replication and RNA synthesis मतलब transcription are taking place inside the nucleus. DNA replication and RNA synthesis are taking place inside the nucleus. In some cell, a portion of the nucleus may be seen as lighter shaded area. In some cell,
A portion of a nucleus may be seen as a lighter shaded area. This is called nucleolus. This is the area for RNA processing and ribosome synthesis. The nucleolus is very prominent in the cell, actively synthesizing protein. Gabriel Valentine in 1836 described the nucleolus. Gabriel Valentine in 1836 described the nucleolus, endoplasmic reticulum. It is a network of interconnecting membrane enclosing channels or cisternae that are continuous from outer nuclear envelope to outer plasma membrane. Under electron microscope, the reticular arrangement will have railway track appearance. George Pallade was awarded a Nobel Prize in 1974 who identified the endoplasmic reticulum. ओके ये बाद में सेपरेशन ऑफ सब सेलुलर ऑर्गेनेल इस कॉलम को थोड़ा बाद में पढ़ूंगा क्योंकि ये सब चीज़ें समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है. ओके एनीवेज this will be very prominent in cells actively synthesizing protein. Example, immunoglobulin secreting plasma cell. The proteins, glycoproteins and lipoproteins are synthesized in the endoplasmic reticulum. Detoxification of various drug is an important function of endoplasmic reticulum. Detoxification of various drug is an important function of endoplasmic reticulum. Microsomal cytochrome P450 hydroxylates drugs such as benzpyrene, aminopyrine, aniline, morphine, phenobarbital, etc. According to the electron microscopic appearance, the endoplasmic reticulum is generally classified into rough and smooth varieties. The rough appearance is due to ribosome attached to cytoplasmic side of the membrane where the protein are being synthesized. When cells are fractionated, the complex endoplasmic reticulum is disrupted in many places. They are automatically reassembled to form microsomes. Golgi apparatus. Camillo Golgi described the structure in 1898, Nobel Prize in 1906. The Golgi organelles is a network of a flattened, smooth membrane and vesicles. It may be considered as a converging area of endoplasmic reticulum. While moving through endoplasmic reticulum, carbohydrates groups are successively added to the nascent protein. These glycoprotein reach the Golgi areas. Golgi apparatus is composed of a cis, medial, trans, cisternae. Glycoproteins are generally transported from endoplasmic reticulum to cis Golgi, that is proximal cisterna, then to medial Golgi, that is intermediate cisterna, and finally to trans Golgi, that is distal cisterna for temporary storage. Trans Golgi are particularly abundant with vesicles containing glycoprotein. Newly synthesized protein are sorted fast according to the sorting signal available in the protein. Then they are packed into transport vesicle having different type of coat protein. Finally, they are transported into various destinations. This is an energy dependent process. Main function of a Golgi apparatus is protein sorting, packaging and secretion. The finished product may have any one of the following destination.
They may pass through plasma membrane to the surrounding medium. This forms continuous secretion. Example, secretion of immunoglobulin by plasma cell. They reach plasma membrane and form an integral part of it but not secreted. They are formed into a secretory vesicle where these products are stored for a longer time. Under appropriate stimuli, the contents are secreted. Release of trypsinogen by pancreatic uh, acinar cell and release of insulin by beta cell of Langerhans are cited as example. The synthesized material may be collected into lysosome packets. Okay. नाउ ऑर्गेनेल्स, सो न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन होता है डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन, ड्रग मेटाबॉलिज्म, इथानॉल ऑक्सीडेशन, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो कि पार्शियल होता है. गोल्गी बॉडी, ये इसका फंक्शन क्या है? मैचुरेशन ऑफ अ सिंथेसाइज्ड प्रोटीन. लाइसोसोम क्या करेगा? डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एटीपी जनरेशन, टीसीए साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, कीटोन बॉडी प्रोडक्शन, यूरिया सिंथेसिस पार्ट में हिस्सा लेता है, हीम सिंथेसिस पार्ट में, ग्लूकोनियोजेनेसिस पार्ट, pyrimidine synthesis part. Okay. साइटोजल, सो प्रोटीन सिंथेसिस. साइटोजल में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, एचएमपी शॉर्ट पाथवे, ट्रांस अमीनेशन, फैटी एसिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, हीम सिंथेसिस पार्ट, यूरिया सिंथेसिस पार्ट, pyrimidine synthesis part, purine synthesis. Okay. Then coming to the lysosome. So lysosome discovered in 1950 by Rein D. Duvey. Nobel Prize in 1974. Lysosome are tiny organelles, solid wastes of a township, are usually decomposed in incinerators. Inside a cell, such a process is taking place within the lysosomes. They are bags of enzyme. Clinical application of lysosome are shown in box 2.1. Okay, box 2.1 कहाँ है? box 2.1 clinical application of lysosomes are shown in box 2.1. बॉक्स, ओहो बॉक्स यहाँ लिखा नहीं है. हाँ, बॉक्स 2.1. ओके, क्लिनिकल एप्लीकेशन नहीं. अच्छा, ये बाद में पढ़ेंगे रे भाई. एंडोसाइटिक वेसिकल्स एंड फागोजम्स आर फ्यूज्ड विथ लाइसोजम्स जो कि प्राइमरी टू फॉर्म सेकेंडरी लाइसोजम्स और डाइजेस्टिव वैक्यूल्स. Foreign particles are progressively digested inside these vacuoles. Completely hydrolyzed products are utilized by the cell. As long as the lysosomal membrane is intact, the encapsulated enzyme can act only locally. But when the membrane is disrupted, the released enzyme can hydrolyze external substrate, leading to tissue damage. The lysosomal enzyme have an optimum pH around 5. These enzymes are polysaccharide, hydrolyzing enzyme, alpha glucosidase, alpha fucosidase, beta galactosidase, alpha manosidase, beta glucuronidase, hyaluronidase, aryl sulfatase lysozymes. प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जिसमें कैथेप्सिन, कोलाजिनेज, इलास्टेज, पेप्टिडेज. ओके.
न्यूक्लिक एसिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएजेस। ओके, एक बार सिर्फ ये पढ़ करके ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद थोड़ा इसके ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जिसमें फैटी एसाइल एस्टरेजेस, उसके बाद फॉस्फोलाइपेजेस, पेरोक्सीजोम। द पेरोक्सीजोम हैव ए ग्रैन्युलर मैट्रिक्स, दे आर ऑफ 0.3 से लेकर के 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। दे कंटेन पेरोक्सीडेजेस एंड कैटालेजेस। They are prominent in leukocytes and platelets. Peroxidation I knew that. Showing something. Peroxisomes. Peroxisome have a granular matrix. The area of 0.3 से लेकर के 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. They contain peroxidases and catalases. They are prominent in leukocytes and platelets. Peroxidation of polyunsaturated fatty acid in vivo may leads to hydroperoxide formation, ROOH, giving rise to ROO. Okay, the free radicals damage molecules, cell membrane, tissue and gene. चैप्टर नंबर 20 में इसके ऊपर डिटेल में है। ओके, ठीक है। Catalases and peroxidases are the enzyme present in peroxisomes which will destroy the unwanted peroxides and other free radicals. Clinical application of peroxisomes are shown in box 2.2. माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बाद में देखेंगे, पहले क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ लाइसोसोम के ऊपर देखेंगे। इन गॉट यूरेट क्रिस्टल आर डिपोजिटेड अराउंड नी जॉइंट। इन गाउट यूरेट क्रिस्टल आर डिपोजिटेड अराउंड नी जॉइंट। चैप्टर नंबर 39 में इसके ऊपर डिटेल में हम पढ़ेंगे। ओके, दीज क्रिस्टल व्हेन phagocytosed cause physical damage to lysosomes and release of enzyme, inflammation and arthritis result. ओके, ठीक है। फिजिकल डैमेज किसको करेगा? लाइसोसोम को करेगा। एंड रिलीज ऑफ एंजाइम, एंजाइम रिलीज होगा, इसके कारण से इन्फ्लामेशन होता है, आर्थराइटिस आता है। ठीक है। फागोसाइटोज्ड कॉज फिजिकल डैमेज टू द लाइसोसोम्स, लाइसोसोम को डैमेज करेगा। एंड रिलीज ऑफ एंजाइम, उसके कारण से। ओके, ठीक है, ये तो बाद में प्रश्न पूछेंगे। फॉलोइंग सेल डेथ द लाइसोसोम रप्चर रिलीजिंग द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम which bring about post-mortem autolysis. Lysosomal proteases, cathepsin, are implicated in tumor metastasis. Cathepsin are normally restricted to the interior of lysosomes,
but certain cancer cell liberate the cathepsin out of the cell. Then cathepsin degrade the basal lamina by hydrolyzing collagen and elastin so that other tumor cell can travel out to form distant metastasis. These are few genetic disease where lysosomal enzymes are deficient or absent. This leads to accumulation of lipids और पॉलीसैकेराइड्स। चैप्टर नंबर 10 में और 13 में इसके ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे। Silicosis results from inhalation of a silica particle into the lungs, which are taken up by phagocytes. Lysosomal membrane ruptures, releasing the enzyme. This stimulates fibroblasts to proliferate and deposit collagen fiber, resulting in fibrosis and decreased lung elasticity. Inclusion cell disease. Inclusion cell disease is a rare condition in which lysosomes lack in enzyme but they are seen in blood. This means that the enzymes are synthesized but are not able to reach the correct site. It is shown that mannose 6 phosphate is the marker to target the nascent enzyme to lysosomes. In these person, the carbohydrate unit are not added to the enzyme. Mannose 6 phosphate deficient enzyme cannot reach their destination, मतलब प्रोटीन टारगेटिंग डिफेक्ट। ओके भगवान, यहाँ तक खत्म हुआ। ओके माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria. So these are spherical, oval or rod-like bodies about 0.5 से लेकर के 1 micrometer in diameter and up to 7 micrometer in length. Erythrocytes do not contain mitochondria. The tail of spermatozoa is fully packed with mitochondria. Mitochondria are the powerhouse of the cell where energy released from the oxidation of food stuffs is trapped as a chemical energy in the form of ATP. चैप्टर नंबर 19 में इसके ऊपर पढ़ेंगे। मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर शोन इन टेबल 2.2। कहाँ पर है भाई टेबल 2.2? कहाँ है भाई टेबल 2.1 गया। टेबल 2. ओके अरे कहाँ थे हम? टेबल 2.2 माइटोकॉन्ड्रिया। ओके ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ मेंशन है। कहाँ चले गए हम? Metabolic function of mitochondria are shown in table 2.2. Mitochondria have two membrane. The inner membrane convolutes into folds or cristae. Figure 2.3 जो कि ये है। और बाद में ये चित्र समझेंगे, पहले थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है नहीं। Mitochondria have two membrane. The inner membrane convolutes into folds or cristae. The inner mitochondrial membrane contain the enzyme of electron transport chain. Chapter number 19. The fluid matrix contain the enzyme of citric acid cycle, urea cycle and heme synthesis. Cytochrome P450 system present in mitochondria inner membrane. Mitochondrial inner membrane is involved in steroidogenesis जो कि चैप्टर नंबर 46 में है। सुपर ऑक्साइड dismutase is present in cytosol and mitochondria chapter number 20. I knew.
peroxisomal deficiency disease. Deficiency of a peroxisomal matrix protein can lead to adrenoleukodystrophy, जिसको बोला जाता है ALD, ब्राउन स्लीडर डिजीज, सिल्डर, okay, characterized by progressive degeneration of liver, kidney and brain. It is a rare autosomal recessive condition. The defect is due to insufficient oxidation of very long chain fatty acid, that is very long chain fatty acid, by peroxisomes. चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे. In Zellweger syndrome, proteins are not transported into the peroxisomes. This leads to the formation of empty peroxisomes or peroxisomal ghost inside the cell. Protein targeting defects are described in chapter number 41. Okay. Primary hyperoxaluria is due to the defective peroxisomal metabolism of a glyoxalate derived from glycine. चैप्टर नंबर 15. ओके, यहाँ पर तो सब रिडायरेक्ट हो रहा है, तो हमें चिंता करने की इतनी भी आवश्यकता नहीं है. इंटीग्रल मेम्ब्रेन, ओके, ये फिगर को बाद में दिखूंगा. नंबर 4 आई थिंक यहाँ पर कंप्लीट हो गया था. HES 5 से शुरू करेंगे. Mitochondria also contain specific DNA. The integral inner membrane protein are made by mitochondrial protein synthesizing machinery. However, the majority of protein, especially of outer membrane, are synthesized under the control of cellular DNA. The division of mitochondria is under the command of mitochondrial DNA. Mitochondrial ribosomes are different from cellular ribosomes. Antibiotic inhibiting bacterial protein synthesis do not affect cellular process but do inhibit mitochondrial protein biosynthesis. Chapter number 41. Taking into consideration such evidences, it is assumed that mitochondria are parasites which entered into the cell at a time when multicellular organisms were being evolved. These parasites provided energy in large quantities, giving an evolutionary advantages to the cell. The cell gave protection to these parasites. This perfect symbiosis in turn evolved into a cellular organelles of mitochondria. A summary of a function of organelle is given in the table 2.2 and box 2.3. टेबल 2.2 तो पढ़ चुका हूँ और बॉक्स 2.3 जो कि ये है. ठीक है. ओके. कंपैरिजन ऑफ अ सेल विथ ए फैक्ट्री. अच्छा, comparison of a cell with a factory. Okay. Plasma membrane, fans with gates open when message is received. न्यूक्लियस क्या करेगा, ये मैनेजर्स ऑफिस. एंडो रेटिकुलम क्या करेगा, कन्वेयर बेल्ट ऑफ अ प्रोडक्शन यूनिट. गोल्गी अपैरेटस किस तरीके से, पैकेजिंग यूनिट. लाइसोसोम होता है इनसिनेरेटर. वैक्यूल्स क्या होता है, लोरीज कैरिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट. माइटोकॉन्ड्रिया पावर जनरेटिंग यूनिट. ओके. फैक्ट्री के साथ हमारे सेल का कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अरे ये भाई कितना बड़ा चैप्टर है वे, अभी तो मुझे छोटा दिख रहा था. बाप रे बाप रे, तो बहुत बड़ा चैप्टर है.
साथ आज ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, ये तो बहुत है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, the plasma membrane separate the cell from the external environment. It has highly selective permeability properties so that the entry and exit of compounds are regulated. The cellular metabolism is in turn influenced and probably regulated by the membrane. The membrane is metabolically very active. The enzyme nucleotide phosphatase 5' nucleotidase and alkaline phosphatases are seen on the outer part of the cell membrane. They are therefore called ectoenzyme. Membrane are mainly made up of lipid, protein, and a small amount of carbohydrates. The content of these compounds vary according to the nature of the membrane. The carbohydrates are present as glycoprotein and glycolipids. Phospholipids are the most common lipid present and they are amphipathic in nature. Cell membrane also contain cholesterol. Fluid mosaic model. The lipid bilayer was originally proposed by Davson and Daniel in 1935. Later, the structure of the biomembranes was described as a fluid mosaic model. Singer and Nicholson in 1972. 4.4a. The phospholipids are arranged in bilayer with the polar head groups oriented towards the extracellular side and the cytoplasmic side with a hydrophobic cores. Figure 2.4a. Okay, छोड़ो. The distribution of the phospholipid is such that choline containing phospholipids are mainly in the external layer and ethanolamine and serine containing phospholipid in the inner layer. Each leaflet is 25 angstrom thick with the head portion 10 angstrom and tail is 15 angstrom thick. The total thickness is about 50 to 80 angstrom. The lipid bilayer shows free lateral movement of its component, hence the membrane is said to be fluid in nature. Fluidity enables the membrane to perform endocytosis and exocytosis. However, the components do not freely move from inner to outer layer, outer to inner layer. Flip-flop movement is restricted. ड्यूरिंग अपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ जिसको बोला जाता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट अकर्स ड्यूरिंग अपोप्टोसिस. प्रोग्राम्ड सेल डेथ जब होता है, अपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ जब होता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट अकर्स. ओके, दिस फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स. ओके, फ्लिपाजेस catalyzes the transfer of amino phospholipid across the membrane. Flopages catalyze the outward directed movement which is ATP dependent. This is mainly seen in the role of ABC protein mediating the efflux of cholesterol and the extrusion of drugs from cell. The MDR multi-drug resistance associated P glycoprotein is a flopages. Ernst Ruska
designed the first electron microscope in 1939. George Binning and Heinrich Roher, Roer, Ro, Roer, Roer, Roer introduced the scanning electron microscopy in 1981, by which the outer and inner layer of a membrane could be visualized separately. All the three workers were awarded Nobel Prize in 1986. The cholesterol content of the membrane alters the fluidity of the membrane. When cholesterol concentration increases, the membrane becomes less fluid on the outer surface, but more fluid in the hydrophobic core. The effect of cholesterol on the membrane fluidity is different at a different temperature. At temperature below the Tm, cholesterol uh, increases fluidity and thereby permeability of the membrane. At temperature above the Tm, cholesterol decreases fluidity. In spore cell anemia and alcoholic cirrhosis membrane, studies have revealed the role of excess cholesterol. The decrease in membrane fluidity may affect the activities of the receptor and ion channel. This has been implicated in conditions like LCAT deficiencies, Alzheimer's disease, and hypertension. Fluidity of cellular membranes respond to variation in diet and physiological states. Increased release of a reactive oxygen species ROS, increase in cytosolic calcium and lipid peroxidation have been found to adversely affect membrane fluidity. Anesthetics may act by changing membrane fluidity. The nature of the fatty acid also affects the fluidity of the membrane. The more unsaturated cis fatty acid increases the fluidity. The fluidity of the membrane is maintained by the length of the hydrocarbon chain, degree of unsaturation, and nature of the polar head groups. Trans fatty acid decreases the fluidity of the membrane due to the close packing of a hydrocarbon chain. Cis double bonds create a nick in the hydrocarbon chain and have a marked effect on fluidity. Second OH group of glycerol in membrane phospholipid is often esterified to an unsaturated fatty acid. Monounsaturated oleic or polyunsaturated linolenic or arachidonic. The nature of fatty acid and cholesterol content varies depending on diet. A higher proportion of PUFA, which increases the fluidity flavor, the binding of insulin to its receptor, a transmembrane protein. Okay. Then membrane protein. प्रोटीन अच्छा ये इस तरीके से क्यों है ई एफ ए बी क्या पॉइंट है Thanks for watching.